Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are very good and staying very safe and sound at their homes. So, class 4, it's your English lecture, and I hope all of you have done the creative writing of school bag and you all have enjoyed doing it. So, class 4, today we are also going to do some creative work. We are going to do picture description. I will give you a very interesting picture. It's really colorful and very interesting. There are so many children in that picture, so I hope you all will enjoy doing it. So I will show you a picture, and you all have to start doing it. So my dear ones, I hope you all have opened your CV copies. So now I'm going to tell you which picture we are going to describe today. Okay, so first of all, open the page, and now you have to write the date, which is 16th of April, and then write Friday. Okay, and in the center you have to write the C work. Okay, so now you will give the heading of picture description. Okay, so you don't have this picture with yourself, but you will write about this picture by seeing from your mobile phones or your laptops, wherever you have opened this video. आप अपने फ़ोन से ही इस पिक्चर को गौर करें और फिर आपने इसमें से इसको गौर करके इसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है. Okay, so you will just give the heading of picture description. You don't have to draw this picture. Okay, you will just write picture description, and then you will start your sentences. Okay, so it's a very interesting picture, right? It's a picture about so many kids who are in the garden, and they are enjoying very much, right? They are laughing, they are playing with each other. So you all have to focus what you can see in this picture. आपने गौर करने कि आपको इस पिक्चर में नज़र क्या क्या आ रहा है. जो आपको नज़र आ रहा है, you have to write it down on your copies. Okay, so first of all you will start from the first sentence, that this is a picture of a park or a playground. You can write whatever you like. You can say this is a picture of a park and there's so many children. आप देर से स्टार्ट करेंगे, देर सो मैनी चिल्ड्रन, और फिर हर सेंटेंस आपका देर से स्टार्ट होगा. जैसे देन यू विल से देर सो मैनी चिल्ड्रन. फिर उसके बाद आप गौर करें इसमें क्या है. देर आर ट्रीज, बिल्डिंग्स, एंड देर सो मैनी थिंग्स एज आई हैव गिवन यू द हिंट. ओके, I've given you some clue words that seesaw. Is there seesaw in the picture? Yes. Where's the seesaw? Yes, this is the seesaw, and two children are on it and enjoying it. Okay, and then there are some more words I have written for you for your help, ताकि आप इसके स्पेलिंग्स यहाँ से देख सकें. ओके, जैसे सीसो है, आपने देखा है पिक्चर में, फिर एक स्विंग है जिसपे एक बच्ची बैठी है. देन देयर इज आल्सो अ ट्रैम्पोलिन. व्हाट इज अ ट्रैम्पोलिन? Do you know what is a trampoline? Yes, this is a trampoline. This, and a boy is jumping on the trampoline. Trampoline is a round soft board, and it's a very soft one, and you can jump on it and you can jump on it as much as you like. इस पर आप बहुत देर तक भी जंप कर सकते हैं जब तक अब आपकी कैपेसिटी होती है. सो इट्स रियली फन टू जंप ऑन इट. सो इट्स अ ट्रैम्पोलिन, and this is a swing, this is a seesaw, and what's this? Yes, this is a slide. What next? You all have to guess it. Okay, then you can write bicycle, trees, and what's this? Two children playing with a bucket, and what's in the bucket? Yes, it's the sand, and they are in the sand box. ये दो children जो sand box में, यानी मिट्टी के box में हैं और वो खेल रहे हैं sand box के साथ. तो आप लिख सकते हैं they're playing with the sand box, right? And some you do look deeply in this picture, you will find so many things if you will observe this picture very carefully.
You can see that there is a boy who has wore what? इसने क्या पहना हुआ है? I'm sure you all have guessed it right. So there are some flowers, trees. और भी आप गौर करें इसमें और भी क्या कुछ है. आप फ्लावर्स के कलर्स भी बता सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स के फ्लावर्स हैं इस पिक्चर में. ठीक है. सो यू ऑल हैव टू लुक केयरफुली at this picture, and you all have to write 7, 8, 10, how many 7 to 8 sentences. या आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं. as much as you like, as much as you want to write, you can write it. Okay, so there are some clue words. आप इनकी हेल्प ले सकते हैं. आप इससे स्पेलिंग्स अपने चेक कर सकते हैं. फर्स्ट इज सीसो, फिर स्विंग है, फिर ट्रेम्पोलिन है जिससे मैंने आपको बताया आप जंप करती हैं एंड यू एंजॉय playing on it. Here there's a bicycle, then helmet. Where was the helmet? Two children were wearing it. Then building, slide, then there are some trees, then there's a sandbox, and then skates. Yes, who was wearing the skate? Let's go back to the picture. Yes, the boy is wearing the skates. So you can write this also. और भी आप इस पिक्चर को गौर से देखिए and write the sentences about this picture. जैसे आपको जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हैं, you can write it. Okay, just observe this picture very carefully. Okay, and notice the colors also. Okay, so these are the clue words. You can take help from these clue words also. Okay, if you don't know the spellings तो आप इधर से spellings भी consult कर सकते हैं. ठीक है. Okay, now I hope you all will attempt it very easily, क्योंकि हमने पहले भी picture description की हुई है 3 क्लास में ना, तो आप लोग अच्छे से इसको attempt कर सकते हैं. It's not difficult, right? Now come to your homework. Okay, so this is your homework which you have to do in your homework copy. Okay, आपने अपनी homework copy में ये करना है. ठीक है. और उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट 5 to 6 lines about your experience when you visited to a park. अब आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है कि आप जब कभी पार्क गए हों, किसी प्लेग्राउंड पे आप गए हैं और आपने वहाँ जाकर क्या किया. आपने बॉल के साथ जैसे खेला, या आपने राइड्स ली, स्विंग, सी सॉ, या आपने बॉल के साथ खेला, या आपने क्रिकेट खेला, या आपने बैडमिंटन खेला, या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला, या आपने अपने पेरेंट्स के साथ खेला. ठीक है. या आपने अपने सिबलिंग्स के साथ खेला. जो भी आपने किया, एक्सपीरियंस का मतलब आपका अपना जो आपने किया. ठीक है. एक्सपीरियंस मतलब जो आपने किया, जो आपका मतलब वो जो हमने पहले पिक्चर की है पीछे, वो उसमें आप नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनरी पिक्चर है. ठीक है. लेकिन अब आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है. ठीक है. यानी आपने क्या किया जब आप कभी पार्क में गए. आप जब भी कभी गए, आपने उस पार्क में क्या किया, आपने जल्दी से अपने ज़हन में उस इंसिडेंट को रिमाइंड करना है, और आपने उसके बारे में जितनी आपको लाइंस, आप मैक्सिमम 6 लाइंस लिख सकते हैं उसके बारे में. ठीक है. जैसे कि इधर भी एक प्लेग्राउंड है. ठीक है. इस तरह आप जब भी कोई किसी प्लेग्राउंड में गए हैं, पार्क में गए हैं, आपने उसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है. ठीक है. आप 6 लाइंस भी लिख सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. अगर आपको 6 ही आ रही हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं. ज़्यादा आ रही हैं, आप उतनी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 6 लिखें. ठीक है. आप इसका भी स्टार्ट ऐसे ही करेंगे. 1 day आई विजिटेड टू पार्क, एंड आप बताएं फिर आप किसके साथ गए. आप लिख सकते हैं. आप अपना स्टार्ट ऐसे करेंगे. 1 day आई विजिटेड टू अ पार्क विद माई पेरेंट्स. फिर आप लिखेंगे आई प्लेड विद देम, या आप लिखेंगे आई प्लेड विद माई सिबलिंग्स देयर, जो भी है. ठीक है. तो आप अपने जिस तरह आपने अपनी जिस तरह आप पिछली वाली पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपने की थी, उसी तरह जिस तरह आपने उसका स्टार्ट लिया था, आप इस होमवर्क में भी इस तरह ही अपना स्टार्ट लेंगे पैराग्राफ का. ठीक है. सो इट्स रियली ईजी, राइट. इस तरह आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पे अपने लिखना आएगा. और आपको पिक्चर्स को, जिस तरह जो हमने सीवक में की है, हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन की, उससे आपको पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना आएगा. आपको पता लगेगा कि हमने पिक्चर को किस तरीके से गौर से देखना है, उसके बारे में हम किस तरह लाइन्स बना के लिख सकते हैं. ठीक है. सो इस तरह बाय डूइंग दिस योर राइटिंग विल इम्प्रूव. ओके.
and your mind will become your mind will be refreshed. अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा, ठीक है। और जब आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में होमवर्क में लिखेंगे तब भी आपका माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि आप अपने इंसिडेंट के बारे में सोचेंगे, आपका जहन काम करेगा, तो आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे इंशाल्लाह। आई नो you all make very good sentences, so I'm looking forward to check your experiences very soon, my class 4. So good luck for that. Do well, inshallah. I am very sure that you will do very well in your homeworks also, and comprehension and I'm sorry, in your picture descriptions also. So now we will meet in now you will meet me in the next lecture, class 4. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.